CNS is remaining. So I will cover the digestive system today, and we'll get done with the CNS next weekend. And I think that will be the end of portion for anatomy. So if everyone's here, I think we'll start with the digestive system. It's a relatively easier system, a short system, something that we're very, accustomed with. We aren't confident about medications of any other system, but when it comes to digestive system, we know what to take when we are having acidity. We know what to take when we are having, constipation or diarrhea or some digestive upset. We are very accustomed to this system. It is one of the easiest systems to understand. So I think we'll start with it. So the digestive system, it starts right in the mouth, because what does digestion actually mean? It means to break down the food particles, the complex food particles that we have eaten, to break down the nutrients that are present in the food particles in a simpler form that can be absorbed from the intestine and that can be utilized by the body for production of energy. So that is what the meaning of digestion is. Okay, breaking down complex nutrients present in food into simpler components. So it is also called as the alimentary or gastrointestinal system. It is like a hollow tube, right? It is a hollow tube. Why is it a hollow tube? Because whatever food we eat or whatever fluids we consume, they are supposed to pass through that tube. So it is a hollow tube through which food material passes and is processed. This is a good word, I think. It is processed along the way. We all know what is processed. We process some kind of data. There is processed food. What does processed food mean? That some kind of activity or some kind of physical or chemical action has been performed on that thing, and it has made into a more consumable or a more acceptable form. So that is what is called as processing. So the food material is processed in the gastrointestinal system. It includes the gastrointestinal tract. Now, what comes in the gastrointestinal tract, we will see one by one. So it is given here, the alimentary canal, which is the gastrointestinal tract. It consists of the mouth, is the oral cavity, followed by the throat, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anal canal, and anus. So, upar se leke niche tak, these are the parts. You can see in this picture, this is the oral cavity, this one, this. And then there is the pharynx. There's the tongue in the oral cavity. Then this is the esophagus, this hollow tube part. Then this is the stomach. It's a muscular bag-like structure. From the stomach, it goes into the small intestine. The small intestine has three parts: duodenum, jejunum, and ileum. So this is the duodenum. Then we have the jejunum, and the ileum is entirely a coiled up structure inside like this. And then from here, it is connected to the large intestine. This is the cecum. The junction between the large intestine and the small intestine is called as the cecum. Then we have the large intestine like this, like this, like this. And then finally, we have the rectum and anal canal followed by anus. So this is the entire digestive system. I'll just rub this off so you can see it properly. Okay, so I think we have a gross idea about what is the alimentary canal, but these are just, the parts of the alimentary canal. But are these the only organs that make up the digestive system? No. Because to digest the food that we eat, we need certain chemicals, certain enzymes, and these are secreted by important glands and important structures called the salivary gland, the liver, and pancreas. Out of these, the liver and the pancreas, they have other functions apart from those concerned with digestion, because we already know that the pancreas, it is a heterocrine gland. I think we studied it last time in endocrine system. It's a heterocrine gland. 90% of it has digestive function, but 10% of it has endocrine function. It secretes hormones, insulin, and glucagon through the 10% endocrine part, which are called as the islet of Langerhans. This is just a revision for you. And the liver, apart from the producing, it produces bile, and bile is important for fat absorption and assimilation. So apart from the bile secretion, which is important for the gastrointestinal function, the liver stores glucose. The liver, it removes toxins from the body, right? So these are all, and it also processes certain drugs and toxins. So these are the other functions apart from the digestion functions of liver and pancreas.
So now we'll look into the alimentary canal one by one, starting from the oral cavity. The ceiling of the oral cavity is formed by the hard palate. So if you see, if you touch your tongue up like this, you can feel that it is hard. So the आगे का part, the anterior part, the proximal part is called as the hard palate. It is formed by the hard palate. And if you take your tongue ऐसे धीरे धीरे पीछे ना, you will feel कि at some point the hard palate becomes soft. जो hard आपको feel आ रही थी when you're touching your tongue to the roof, initially it is hard because there's a bony, that's a bony side. But when you take it as its tongue थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे, if you try it in your own mouth, you will feel कि एक point के बाद there is a junction and उसके बाद it becomes soft. So that part is called the soft palate. So we have the hard palate, then we have the soft palate. Then the tongue. This tongue, it is a muscular organ connected only to the back of the floor of the oral cavity. For example, if this is the oral cavity, the floor now, this is the tongue like this. My drawing is very bad, so please excuse me. So this is the tongue. It is connected to the, इसका सिर्फ पीछे का part is connected to the floor of the oral cavity, right? Because पूरा part अगर connected होगा, तो फिर the tongue will not have mobility, and if it doesn't have mobility, तो हमारा जो chewing का process है, हमारा जो बात करने का process है, whatever sound is produced from your larynx, from your vocal cords, उसे words में modulate करना is the work of our tongue, of our teeth, and of our lips, right? तो अगर हमारी tongue अच्छे से मोबाइल नहीं होगी, sometimes you know if we bite our tongue तो दर्द होता है, तो we're not able to talk properly. Why? Because the mobility is altered, the mobility is restricted, and because of restricted mobility, not able to talk. So ये mobility क्यों है tongue को? Because it is a muscular organ, so it is a muscle, so it can move in different ways. And two, it is only attached to the floor of the oral cavity पीछे से. So the entire front part is mobile. Okay. अब इस tongue का एक और काम क्या है? Taste. So different types of taste buds are located on the upper surface of the tongue. So if this is the tongue, ये upper surface पे there are different types of taste buds located. Okay. Salivary glands are located below and behind the lower jaw. See, okay, so there are 3 pairs of salivary glands, which means there are total 6 salivary glands. One is the parotid, जो यहाँ पे होता है. Parotid gland is situated here. Then there's the submandibular. This is the mandible bone. So submandibular मतलब below the mandible. They're here. And then there are the sublingual. Lingual मतलब tongue, which means they are below the tongue. So they are present here. Okay. So there are 3 pairs of salivary gland. Parotid, submandibular, and sublingual. Okay. They open in the mouth through tiny ducts on the floor and side of the upper back teeth. Okay. So just हमारा second molar teeth है ना, उसके वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल मतलब क्या, हमारे जो चीक्स है, चीक्स का जो इनर पार्ट है जिसको हम बक्कल म्यूकोसा बोलते हैं, उसके और हमारे टीथ के बीच में एक स्पेस होती है ना, ये इस स्पेस में वो सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स खुलते हैं. एंड it has ducts, which means they are exocrine glands. जिसको ducts नहीं होते, they are called as endocrine glands. Okay, so ये salivary gland है, इसके ducts खुलते हैं in the vestibule near the second molar, and वहां से the saliva that is being produced in the salivary gland, it gets delivered inside the mouth. और ये saliva क्यों important है? One, it is to ease the process of swallowing, क्योंकि जो खाना dry होता है उसे swallow करना is difficult, it is painful because it's dry, it sticks to the mucosa. So saliva का एक काम क्या है कि it makes the food soft, and also it is the first place of digestion. मतलब हमारा digestion का process जो है ना, वो salivary glands से ही चालू हो जाता है. मतलब जो salivary secretion है वही से चालू हो जाता है. Because in saliva there is one enzyme called salivary amylase. Salivary amylase.
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आई एम स्टिल टेलिंग इट टू यू ताकि आपको लिंक लगे. सो इस एंजाइम का नाम है, ठीक है. तो ये सलाइवरी एमाइलेज जो है ना, ये क्या करता है, हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसे ब्रेक डाउन करता है. नॉट कंप्लीटली, बिकॉज आगे जाके भी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होने ही वाला है कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन. बट चालू कहाँ से होता है कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन? इन द माउथ इटसेल्फ. इसीलिए हमें बचपन में, मतलब मुझे तो मेरे दादाजी कहते थे कि 32 वेळा चावून खायचं असतं. कि बेसिकली अगर आपने, जो हमारा च्यूइंग का प्रोसेस है हम उसे काफी नेग्लेक्ट करते हैं. आई फील कि पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में ये एक ही प्रोसेस है जो हम पे डिपेंड है. बाकी तो अदरवाइज सारा कुछ हमारा जीआईटी देख ही रहा है विदाउट आर नॉलेज. एक बार खाना गले गले से नीचे उतर गया, उसके बाद हमें पता भी नहीं होता कि वो कहाँ है, वो पेट में है या अभी वो कौन से इंटेस्टाइन में है. वी डोंट नो, क्योंकि वो द बॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ इट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बट द ओनली प्लेस वेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन इज ड्यूरिंग द चूइंग प्रोसेस. तो अगर वो भी हम ढंग से ना कर पाए, फिर बाद में हम कंप्लेन करें कि अरे मुझे तो स्टमक अपसेट होता है, मुझे तो मला तर जेवण लागतच नाही, किंवा मला तर म्हणजे माझं वजनच वाढत नाही, किंवा माझं वजन खूप वाढतं, वॉट एव्हर डायजेस्टिव अपसेट्स दैट वी हैव. स्टमक अपसेट होता है, पेट दर्द करता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारे प्रॉब्लम्स. सो हमारे साइड से क्या कर सकते हैं, वी कैन च्यू द फूड प्रॉपरली. लाइक जितना आप आराम से खाओगे. इसलिए इट इज सेड कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पे ध्यान देना चाहिए. खाना खाते वक्त टीवी देखना या फिर किससे बात करना फोन पे या डिस्ट्रैक्टेड रहना, इट्स नॉट गुड, बिकॉज then you cannot focus on the one thing that is your responsibility while digestion, which is chewing food. Okay. ये माउथ हमने देखा, ओरल कैविटी, इसके पीछे होता है फेरिंक्स. तो आप हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको शायद सर ने सिखाया था कि इन आरएस ना, नोज नेजल कैविटी के बाद आता है लैरिंग्स. और अब हम जो देख रहे हैं इन जीआईटी, इन आफ्टर ओरल कैविटी ना, देयर कम्स फेरिंग्स. सो इन दोनों वर्ड्स में काफी कंफ्यूजन होता है. मुझे भी अभी अभी तक होता था कि मैं याद नहीं रख पाती थी कि लैरिंग्स कौन से सिस्टम से जुड़ा हुआ है और फेरिंग्स कौन से सिस्टम से जुड़ा हुआ है. सो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जीआईटी का काम, जीआईटी इज रिलेटेड टू फूड, राइट. सो फ से फूड और फ से फेरिंग्स, सो यू कैन रिमेम्बर इट दैट वे, फूड एंड फेरिंग्स. सो जीआईटी में ओरल कैविटी के बाद वी हैव द फेरिंग्स, whereas रेस्पिरेटरी सिस्टम में आफ्टर द नेजल कैविटी वी हैव द लैरिंग्स. ठीक है. तब अब फेरिंग्स का क्या बोलते हैं उसको, फेरिंग्स का कंटिन्यूएशन ही होता है हमारा इसोफेगस. सो फेरिंग्स इज कनेक्टेड विद द स्टमक थ्रू अ मस्कुलर ट्यूब. सो इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब, इज अराउंड 25 सेंटीमीटर इन लेंथ. और जो हमारा ट्रकिया है, जो हमने आरएस में पढ़ा था, ये जो हमें यहाँ पे फील होता है ना, दीस स्ट्रक्चरल रिंग्स, ये ट्रकिया है. तो इसके पीछे हमारा इसोफेगस सिचुएटेड होता है. सो द ट्रकिया लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस, राइट. आई थिंक इसमें कुछ पेजेस मिसिंग है. नो प्रॉब्लम, मैं आपको खुद से पढ़ा दूंगी. जस्ट 1 मिनट. ठीक है. तो हमने देखा कि ईसोफेगस था, इट जॉइंट्स द फेरिंग्स टू द स्टमक, राइट. तो आप, ये ईसोफेगस का लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर. इसके आगे सिचुएटेड होता है ट्रकिया, इस तरह से, जो इसकी ट्रकियल रिंग, और उसके पीछे होता है ईसोफेगस. ईसोफेगस इज अ पेटेंट ट्यूब. पेटेंट ट्यूब का मतलब क्या है कि ये हमेशा खुला नहीं होता है. इट इज कोलैप्स्ड, इट इज कोलैप्स्ड, राइट. क्यों कोलैप्स होता है? क्योंकि we don't want anything apart from food to go inside the esophageal tract. तो जब फूड आएगा ना मुंह में, when we chew and when we swallow, उस टाइम पे क्या होता है कि ये ट्रकिया है और ये इसोफेगस है. ट्रकिया कैसा होता है ना, ट्रकिया यू कैन सी दैट इट्स अ हार्ड स्ट्रक्चर, और जो चीज हार्ड है वो कोलैप्स होगी क्या? नहीं. सो ट्रकिया इज अ सॉलिड ट्यूब.
whereas esophagus is a muscular tube, so esophagus can collapse. है ना? तो अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कभी कभी when we are swallowing, we know कि अभी ट्रकिया esophagus के जस्ट आगे है, तो while swallowing sometimes what can happen, food can enter the trachea. So इसका प्रूफ क्या है? कभी कभी जब हम खाते वक्त बात करते हैं तो आपल्याला ठसका लगता है, तो why does that happen? Because usually ना when we swallow, यहाँ पे एक there's this one cartilaginous structure called as epiglottis. It is present in the pharynx. So ये जो epiglottis होता है ना, when we swallow, this epiglottis falls over the opening of the trachea, right? और ये क्या करता है? ट्रकियल ओपनिंग को कवर करता है फॉर द टाइम बीइंग, जब आप swallow कर रहे हो तब. So when you are swallowing, it makes sure keep this and also 2 or 3 other mechanisms. So these mechanisms, they make sure that the food that you are eating, it doesn't enter the trachea, or it doesn't enter the what do you say, the respiratory system. तो जब आप खाते वक्त बात करते हो या यू नो ऐसे कुछ सांस लेने की कोशिश करते हो, तो फिर आपको अपना ठसका लगता है. इसलिए हम कहते हैं कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट ब्रीथ व्हाइल यू स्वॉलो, राइट? बिकॉज जब हम सांस लेते हैं तब हमारा ट्रकिया खुला होता है, तो बिकॉज ट्रकिया खुला है वी कैन नॉट स्वॉलो, बिकॉज खाते वक्त द epiglottis is supposed to close the trachea, right? इसीलिए you can even try it once. You cannot breathe while swallowing because your tracheal opening is covered. So this is how it prevents aspiration. जब कोई और anything apart from air, when it enters the tracheal what do you say, the tracheal tree ना, the tracheobronchial tree, तो उसे हम कहते हैं aspiration. So basically you want to prevent aspiration. You want to prevent aspiration of food और एस्पिरेशन ऑफ एनी फॉरेन बॉडी, जो बच्चों में कभी कभी होता है. अगर बच्चों को आदत होती है, छोटे बच्चों को कुछ भी उठा के मुंह में डाल देते हैं, समटाइम्स दे कैन स्वॉलो इट और इवन समटाइम्स दे कैन चोक ऑन इट. सो इफ समथिंग goes into your trachea which is not supposed to be there, apart from air nothing is supposed to be in your trachea. So when you breathe something on it, you start choking. So ये जब choking चालू होता है तभी we start vigorous coughing, में बहुत जोर से खांसी आती है, बिकॉज दैट इज आवर बॉडीज रिफ्लेक्स और मैकेनिज्म टू थ्रो दैट फॉरेन बॉडी आउट, राइट? सो ये हमने देखा ईसोफेगस. सो ईसोफेगस से ट्रैवल करके खाना आता है अब स्टमक में. दिस इज द स्टमक, इट्स अ मस्कुलर बैग. ओके, स्टमक में ना देयर इज दिस एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिन. तो ये जो पेप्सिन है ना, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन ब्रेक. हमने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हुए सलाइवरी अमाइलेज की वजह से कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन हो रहा था, और यहाँ पे भी आर सीइंग कि प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है. सो प्रोटीन ब्रेकडाउन इज बिकॉज ऑफ पेप्सिन व्हिच इज सिक्रीटेड इन द स्टमक. और स्टमक में एक और चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज एसिड व्हिच इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, ये पेप्सिन को स्टिमुलेट करता है, और सिर्फ एक बार पेप्सिन स्टिमुलेट हो गया तो हमारा प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब सिक्रीट होता है? इट इज स्टिमुलेटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. मतलब क्या कि whenever we see something, whenever we हमें बहुत भूख लगी है पहले से, when we see पाव भाजी, or for example when we see something some of our favorite dishes being cooked, और हम उसका नाम भी सुनते हैं, हमें उसकी स्मेल आती है, तो अपने आप our mouth starts watering, हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है. Why is that? Because now the body feels कि अरे हाँ अभी इसने ये खाना देख लिया है, so now hopefully he's going to eat it. So our body is preparing itself for the process of digestion, right? So इसीलिए टाइम टू टाइम खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी बॉडी का साइकिल जो है उस तरह से ट्यून हो चुका है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर समवन हु हैज ब्रेकफास्ट फॉर एट 8 AM सिंस द लास्ट 10 days, एंड देन फॉर मे बी शायद एक दिन आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, आपने डायरेक्टली लंच किया 1 बजे, तो आपके पेट में उतने 2-3 घंटे तक, जितने घंटे आप भूखे रहे, जितने घंटे आपने अपना डेली रूटीन का टाइम मिस किया, योर स्टमक, you are going to feel that acidity, you are going to feel that heartburn, क्योंकि आपका body is accustomed to having that food inside the stomach at this time. So उस हिसाब से the body is going to secrete वो HCl and the pepsin उस time पे. But if the food doesn't enter at that time, this HCl, it is going to act on the stomach mucosa, right?
तो हमारा जो स्टमक का म्यूकोसा, अभी एसिड है, इसका पीएच इज ऑलमोस्ट 1.2, विच इज लाइक प्रिटी एसिडिक, पर हमारे स्टमक के अंदर का जो म्यूकोसा होता है ना, इट हैज अ लॉट ऑफ म्यूकस प्रेजेंट इसके अंदर। दिस एंटायर स्टमक का लाइनिंग जो होता है, इसके अंदर म्यूकस होता है, देयर आर बाइकार्बोनेट आयंस। सो ये सारी चीजें ना, ये एसिड के एक्शन को एंटागोनाइज करने के लिए होते हैं, ताकि अगर ये एसिड एक्ट करेगा हमारे स्टमक पे, और हमारे पास ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स नहीं है, एंड इफ देयर इज नो फूड इन द स्टमक टू एक्ट, राइट, मतलब अगर स्टमक में खाना नहीं है बट एसिड सिक्रीट हो रहा है, तो ये एसिड किस पे काम करेगा? एसिड विल वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, राइट। ये जो वॉल्स है स्टमक के, ये उसे खा जाएगा, और धीरे 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 करके देखेंगे वो परफोरेशन। तो इससे हम कहते हैं, जो एसिड की वजह से जो म्यूकोजल एपिथेलियम का जो इरोजन होता है ना, उससे भी कॉल एज पेप्टिक अल्सर, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि आप, if you stay hungry for long hours, or if you eat a lot of spicy food, or there's a lot of alcohol and cigarette intake, तो I'm so sorry. स्क्रीन नहीं दिख रही है ना आपको? एक मिनट। हाँ, तो I think not disappeared, but never mind. So I was telling you कि अगर ये एसिड ने खाना नहीं है पेट के अंदर, एंड इफ दिस एसिड स्टार्ट्स वर्किंग, तो व्हाट विल हैपन, इट विल इरोड द स्टमक का मस्क्यूलेचर, एंड इसकी वजह से देयर विल बी अल्सर्स पहले, और ये अल्सर्स अगर और डीप होते गए तो देयर विल बी परफोरेशन। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वी हैव टाइमली मील्स, एंड दैट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, और हेवी इनटेक ऑफ अल्कोहल, या फिर लॉट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, बिकॉज these are all risk factors for developing पेप्टिक अल्सर। एंड पेप्टिक अल्सर अगर एक बार हो गया, इवन स्ट्रेस की वजह से भी, बिकॉज जब हमें स्ट्रेस होता है ना, तब हम we don't realize that there is acid being secreted, because acid तो secrete हो रहा है, but then हमारा जो blood flow होता है वो सारा हमारे gastrointestinal system से निकल के मसल्स में आ जाता है, we have talked about this। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, we don't realize that this process is happening, और ये जो HCl होता है, this keeps on doing its action because of the normal physiology, but हमें वो realize नहीं होता। So because of that, stress is also a risk factor for peptic ulcers। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, पेप्टिक अल्सर जब हमें, सी इट डजंट डायरेक्टली कॉज पेप्टिक अल्सर, इनिशियली देयर विल बी थोड़ा 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 करके रेगुलर एसिडिटी, इफ यू आर हैविंग एन इरेगुलर डाइट, और यू आर हैविंग लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, या फिर यू आर स्टेइंग हंग्री फॉर लॉन्ग आवर्स, तो उसकी वजह से जो हमें जो बीच बीच में पेट दर्द होता है भूख की वजह से, इफ दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, तो देन इट विल कॉज दीज पेप्टिक अल्सर। और इस पे जब हमें दर्द होता है, तो व्हाट डू वी हैव पेप्टिक अल्सर्स पे ट्रीटमेंट वी टेक, हमें तो अब तो ये फ्रेंडली नेम हो गया ओमेसडी, तो एक्चुअली ओमेसडी का जेनरिक नेम है ओमेप्रेजोल, which is a proton pump inhibitor। proton pump inhibitor मतलब क्या है, you don't need to know, but basically it reduces the secretion of that HCl। HCl को inhibit करता है proton pump inhibitor। ओके, सो यहाँ पे भी 100 की प्रोटीन ब्रेकडाउन हो गया। सो यहाँ से आगे निकल के नाउ वी हैव द डुओडेनम, द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स। उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो डुओडेनम होता है, देन देयर इज द जेजुनम, एंड देन पूरा ऐसे बड़ा सा देयर इज अ लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज कॉल्ड एज द ileum। सो वी हैव द duodenum, we have the jejunum and the ileum। अब
ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्पेशली द जेजुनम एंड द आइलियम, दिस इज द मेन प्लेस फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना डुओडेनम में द पैंक्रियास दे ओपन एंड द लिवर आल्सो ओपन्स. बेसिकली लिवर से जो बाइल निकलता है ना, इट व्हाट डू यू से, it joins the duct from the pancreas and they form one common duct which is called the common bile duct, and that opens in the duodenum. So basically liver और pancreas के secretions आते हैं in the small intestine, and these enzymes, pancreas, they secrete lipase which is responsible for fat breakdown. They secrete amylase which is again responsible for protein breakdown and carbohydrate breakdown. Then liver secretes bile which is responsible for the absorption of fat. So ये सारे जो एंजाइम रहते हैं secreted by liver and pancreas, ये एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये एक्ट करते हैं ऑन द फूड दैट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. द स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, अभी आई डोंट नो द एग्जैक्ट लेंथ, but it is like the longest part. The longest part of the gastrointestinal system is the small intestine. It is some, I'm not sure, but you can Google it. I don't remember the number, but it is something 1 meter or something. The length. It is really, really coiled up in your abdomen. Okay. फिर यहाँ से ना जो लास्ट पार्ट है इलियम का, that gives rise to our large intestine. So large intestine के 3 parts होते हैं, एक तो ascending, एक ट्रांसवर्स और फिर एक डिसेंडिंग. ठीक है, सो ये है असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग पार्ट. फिर यहाँ पे एक छोटू सा वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स. वेस्टिजियल मतलब जिसका हम में कोई यूज नहीं है. ठीक है, तो ये इसका कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन या फिर ऑल्ट्रेशन इन दी इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जिसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस. आई थिंक there must be at least one of you who must have suffered from this condition and have gotten an appendicectomy done. So that is a very common condition, and it is it should be treated promptly, because then otherwise if it's not treated it can have complications like perforation or bleeding and peritonitis. Okay, so we have 3 parts of the large intestine: ascending, transverse and descending colon. सो अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन मेनली क्या होता है ना, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे ज्यादातर वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब. So basically, if you're having any diarrhea ka problem, if you're having a lot of watery stools, the problem is mostly in the large intestine because then there is faulty absorption of water. ठीक है, डाइजेशन का जो पार्ट है, मतलब ब्रेकडाउन का और न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन का जो पार्ट है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खत्म हो जाता है. जो मिनरल्स बचे होते हैं हमारे बॉडी में, या मतलब जो फूड में, या फिर जो पानी होता है हमारे, obviously there is going to be water in the food that is being processed in the GI tract. So इसका absorption का काम is done by the large intestine. ठीक है, so इतना सब होने के बाद finally this was the large intestine. Now we come to the end organ which is the rectum. So rectum क्या करता है ना, it stores the feces, right? Feces के storage का काम rectum का होता है. Then there is the anal canal and then there is the anus. So anal canal के through pass होके food is thrown out of the body by the anus. एनस में भी 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, जैसे हमने यूरिनरी ब्लैडर में 2 स्फिंक्टर्स देखे थे, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल. इसमें से इंटरनल वाज इनवॉलंटरी एंड एक्सटर्नल वाज वॉलंटरी. सेम केस एनस में भी है. देयर इज एन इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एन एक्सटर्नल. तो जो एक्सटर्नल है ना, दिस इज I think, so voluntary का मतलब क्या, we have control over this sphincter, which is why, and this control it develops over time, which is why to babies we have to put them on diapers. Why? Because they don't have urinary and fecal control. वो उनको control नहीं होता. They don't know where to pass stools, where to pass urine, because they don't have control over their
external anal sphincters and external urethral sphincters. But over time we learn, जिसे हम कहते हैं potty training की, इस टाइम पे potty करनी चाहिए, या फिर this is the place where you pass stools, या फिर this is the time when you pass stools. You cannot pass stools and SAB, and you have to pass stools after you take off your pants or take off whatever you are wearing, otherwise it's going to soil your clothes. तो ये सारा जब हम सिखाते हैं, this is the process of toning the external anal sphincter. हमें जो कंट्रोल आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऑन द एक्सक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, वो हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर देता है हमें. ठीक है, तो ये था हमारा इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल. I think digestion को almost 12 to 17 hours लगते हैं, although I'm not very good with numbers, but you can still check it up. And if there is any problem with this entire digestive system, you can suffer from conditions like diarrhea. Most common is diarrhea. हमने बाहर कुछ खराब खा लिया, या फिर हमने कुछ स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी खा लिया, या फिर फूड पॉइजनिंग हो गया, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम इज डायरिया. देन अगर अगर ये जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ये ऊपर वाले रीजन में, मतलब अपर जीआई ट्रैक्ट इज अबव दी ऑलमोस्ट नियर दी डुओडेनम, मतलब डुओडेनम के ऊपर जो भी है, मतलब क्या, डुओडेनम, स्टमक, इसोफेगस, ओरल कैविटी, यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इट इज द अपर जीआई ट्रैक्ट, एंड उसके नीचे अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट इज द लोअर जीआई ट्रैक्ट. सो अगर ऊपर ही कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको स्टमक में कुछ इरिटेशन है, या फिर द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग इज नॉट बीइंग एबल टू प्रोसेस, मतलब स्टमक उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके इसोफेगस की जो स्फिंक्टर्स है, अभी सी ये जो इसोफेगस है और ये स्टमक है ना, तो यहाँ पे दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक तो होता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और एक होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. तो जब आप खाते, व्हेन यू स्वॉलो ना, दिस अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर इट ओपन्स, अलाउज फूड टू पास डाउन, और जब फूड यहाँ आ जाता है ना, तो ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ये ओपन होता है और खाना जाता है स्टमक में. पर ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, it is very important to keep this closed at most times. Why? Because otherwise it is going to regurgitate up. So हमें जो कभी कभी खाना ऊपर आता है, मैं क्या खाल्यावरती कसं पोटात जळजळत आहे. Why does that happen? Because sometimes ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ना, ये खुल जाता है अचानक से अपने आप. एक्चुअली इसका काम क्या है, जो खाना स्टमक में है उसे वापस ऊपर ना आने देना, उसे रेट्रोग्रेड फ्लो ना करने देना. बिकॉज ये जो खाना नीचे जा रहा है, इसको मदद कौन कर रहा है, इस प्रोसेस को हेल्प कौन कर रहा है? एक तो होता है कि ग्रेविटी, ऑब्वियसली, बिकॉज हम इस तरह खड़े हैं तो द फूड इज ऑब्वियसली गोइंग टू गो डाउन विद ग्रेविटी. बट देयर इज अनदर प्रोसेस दैट गोज ऑन दैट actually mainly facilitates this downward flow of food. It is called as peristalsis. Peristalsis क्या होता है? Alternate contraction and relaxation of the GI muscles. राइट? तो इसका मतलब क्या है कि सपोज अभी हमारा खाना इसोफेगस में यहाँ पे है, तो इसे नीचे पुश करने के लिए ना, दिस पार्ट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू रिलैक्स. तो उसकी वजह से क्या होगा, खाना नीचे जाएगा. फिर एक बार खाना यहाँ आ गया, नाउ दिस पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दिस पार्ट रिलैक्सेस, ताकि ये खाना और नीचे जाए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऊपर वाला पार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग टू पुट द फूड डाउन, एंड द नीचे वाला पार्ट इज रिलैक्सिंग टू अकोमोडेट द फूड दैट इज कमिंग डाउन. So this alternate process of, it's a wave of peristalsis. It is like this, right? Like contract relax. ऐसे ये push करेगा खाने को नीचे, ऐसे 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 करके खाना धीरे धीरे नीचे जाएगा. This is called as peristalsis. और ये peristalsis की वजह से खाना ऊपर नहीं आता, because इस peristalsis का जो direction है, that is unidirectional, नीचे के साइड. तो जब हमें वॉमिटिंग होती है, या फिर जब हमें जेवण हो रहता है, उल्टी साल, या फिर व्हाट वी कॉल एज नॉशिया, तो इसका रीजन क्या होता है ना, कि जो हमारा पेरिस्टाल्टिक जो वेव है ना, उसका मोटिलिटी इधर कम हो जाता है, या फिर उसका मोटिलिटी कभी कभी रिवर्स हो जाता है, या फिर हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, उसका टोन कम हो जाता है. टोन मतलब क्या, उसने ढंग से जो पकड़ के रखा था खाने को इन द स्टमक, इट वाज नॉट लेटिंग द फूड इन द स्टमक गो बैक टू द इसोफेगस. तो इसका टोन अगर कम हो गया ना, तो द फूड इन द स्टमक इट इज गोइंग टू रिगर्जिटेट बैक. Regurgitation कहते हैं इसे. It is going to regurgitate back into the esophagus, which is going to give that feeling of a heartburn. हमें बहुत, मतलब खाने के बाद जब खाना अगर कभी ऊपर आए तो हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है. Why is that? Because stomach में क्या प्रेजेंट है, एसिड.
तो अब जब ये खाना स्टमक में पहुंच चुका है, द एसिड हैज एक्टेड ऑन इट, सो नाउ ये एसिड, हमारा खाना, वो सब एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स, इट हैज बिकम वन सिंगल सब्सटेंस, एंड व्हेन दिस सब्सटेंस कम्स अप देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एसिड, और हमारा जो इसोफेगस है उसमें उस तरह का प्रोटेक्शन नहीं बना जैसा स्टमक में बना हुआ है, बिकॉज स्टमक हैज द प्रोटेक्शन to protect the mucosa against and to protect the wall against the acid that is being secreted in the stomach. But esophagus में ऐसा कुछ नहीं है, which is why when this acidic substance along with the food particles it comes up during vomiting or during regurgitation, we have this burning sensation in the esophagus. This is because of the acid that is present in the stomach. Okay, this was the mechanism of vomiting. So you can have diarrhea, you can have vomiting. They can even be, dysentery. So dysentery और diarrhea में फर्क क्या है? Dysentery is when there is blood in the stools. So dysentery usually infective origin की वजह से होती है. कभी-कभी अगर आपको salmonella, typhoid, या फिर shigella हो गया, या फिर there are different types of bacterial intestinal pathogens that can cause diarrhea. There can be constipation, there can be bleeding. So these are all the frequent GI complaints. There can be pain. Pain तो सबसे frequent complaint होती है digestive system की. We don't know, it's just paining. So it can be a burning type of pain, या फिर it can be a dull aching type of pain, या फिर it can be a pushing type of pain, right? So ये सारे these are the different common symptoms that we experience because of different pathologies at different levels in the gastrointestinal system. ठीक है? So I think ये तो clear है अभी. यहाँ पे क्या दिया है? Just look at it. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. जब सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब क्या, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिव सिंपैथेटिक सिस्टम, व्हेन वी गेट स्टिमुलेटेड और व्हेन वी सेंस दैट देयर इज सम काइंड ऑफ थ्रेट, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है ना. इट इज द वन दैट स्टिमुलेट्स आवर एड्रिनल मेडुला टू सीक्रेट एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन. तो ये कौन करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम. तो व्हेन सिंपैथेटिक सिस्टम इज ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ थ्रेट दैट इज परसीव्ड बाय आवर माइंड, तो व्हाट इट डज इज हमारे एसिड सिक्रीशन को, जो मैंने कहा कि हमारे इस टाइम जब हमें कोई थ्रेट है तो इस टाइम पे बॉडी का प्रायोरिटी फूड डाइजेस्ट करना नहीं होता. ऐसे टाइम पे बॉडी का प्रायोरिटी क्या होता है? हमारा मसल सप्लाई बढ़ाना, राइट? हमारा एजिलिटी बढ़ाना, हमें फाइट फ्राइट इन सारे एक्शंस में हमें हेल्प करना. हमें अगर भागना है या हमें फाइट करना है उस थ्रेट से, तो उसके लिए हमारे बॉडी को जिसकी जरूरत है वो बॉडी ने देना चाहिए उस टाइम पे. तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. तो कॉम्प्रोमाइज कौन करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, व्हिच इज व्हाई व्हेन द सिंपैथेटिक सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड, द एसिड सिक्रीशन गेट्स रिड्यूस्ड. हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को आता है, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस अगर हो रहा है जीआई सिस्टम में, तो ब्लड सप्लाई तो चाहिए. और ब्लड सप्लाई इसलिए भी चाहिए क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो ब्लड में पहुंचने तो चाहिए. तो उसके लिए ब्लड सप्लाई भी नीड ना, बिकॉज वट एवर न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, by the large intestine, जो water और minerals absorb हो रहा है, they have to get mixed in the blood. So for that, blood has to be in contact with the digestive system. इसलिए हम जब कहते हैं ना कि खूब खाते पण लागत नहीं, तो maybe that is because the blood supply to the digestive system is reduced because the person is maybe under some kind of stress. If there is not proper blood supply to the digestive system, then no matter how good or how nutritious food you eat, it is not going to get absorbed by the by the body, and it is not going to reach the places. Because the blood supply to the digestive system is reduced, because the sympathetic system is constantly activated, then the movement is reduced. Yes, peristalsis जो हमने कहा, मैंने आपको बताया, movement मतलब क्या? peristalsis. हमें भूख नहीं लगती. when we are under some kind of stress, we don't feel hungry. we feel कि sometimes ऐसा भी होता है कि जब बहुत टेंशन होता है ना, तो 2-3 दिन से stools पास नहीं होते. Why is that? Because the movement has been reduced. When the person is under stress, the peristaltic activity, the motility of the gut, it gets reduced, which is why there can be constipation in conditions of stress. And digestion slows down. Basically, all of this causes digestion to slow down. इसके अपोजिट जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हमारा यूजुअली एक्टिव होता है, लाइक राइट नाउ वी आर एट रेस्ट, वी आर नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो our पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज एक्टिव. इसी वजह से क्या होता है? हमारे एसिड सिक्रीशन ज्यादा होते हैं, हमारा ब्लड सप्लाई टू द जीआईटी इज प्रॉपर, movement of the GIT is proper, and digestion is fast, right? So when the parasympathetic system is working, the digestive system is working properly. When the sympathetic system gets activated, the digestive system का function gets compromised. Okay,
The effect of yoga practice. General effects of regular yoga practice. Practice of yoga is not indicated for 4 to 5 hours after consuming food since the process of digestion is on and more blood supply is diverted towards the digestive tract. Correct. जब सबसे पहले से करें खाना खाने के बाद योगा नहीं करना चाहिए. Therefore, ideally, yoga practices are indicated early in the morning when the system is completely at rest. It has been experienced and proved that practicing yoga regularly establishes homeostasis in the body. Therefore, there is an overall regularization of the functioning of digestive system. According to Ayurveda, general health depends on the functioning of your digestion. Hence, this leads to a better general health. It has been shown that minor functional disorders like constipation, indigestion, etc. get corrected by regular yoga practices over a period of time. Correct, because when you practice different asanas and different postures, आपका जो मोटिलिटी है गट का इट गेट्स करेक्टेड बिकॉज ऑफ विच हमें जो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है कॉन्स्टिपेशन इंडाइजेशन डायरिया के तो वो करेक्ट हो जाता है. नाउ इफेक्ट ऑफ आसनास एंड मुद्रा. ऑल दी आसनास हैव एन इफेक्ट ऑन द स्पाइनल कॉलम एंड द एब्डोमिनल कैविटी. हमारे मोस्टली जो आसन होते हैं ना they are based on the axial part of our body. So this is the axial part and this is the peripheral appendicular part, right? So हमारे आसन, most of them like turning, twisting, bending, they are all around the axis of the body. और axis of the body पे क्या है? पीछे spine और आगे abdominal और thoracic cavity. Alternate positive and negative pressure is exerted on the abdominal cavity in different asanas. Let's stretch on the abdomen in asanas like Ushtrasana. While breathing in and out during the final posture, positive and negative pressure is exerted. In Dhanurasana, though same type of stretch is there, it is against the cavity, right? Because in Ushtrasana, we bend in this manner. Whereas in Dhanurasana, it is against the ground, like this, right? There's a pressure on the abdomen in Pavan Muktasana and Yoga Mudra, right? In Pavan Muktasana also we, approximate our hips on our abdomen and chest. And in Yoga Mudra, we clench our fists and we put it under the abdomen and we bend down. So all of these, they create a positive pressure on the abdominal cavity. Ardha Pavan Muktasana induces alternate pressure on each side, right? In Ardha Pavan Muktasana, what we do is we, flex one leg and then we flex the other leg. So, ऐसे case में there is alternate pressure, right? Pehle pressure is on the right side and on the left side, and like that. In Paschimottanasana, less pressure is exerted. There is a cross-sectional twist and pressure in alternate directions during Ardha Matsyendrasana. Active pressure is exerted in Mayurasana. In topsy-turvy postures like Sarvangasana, Sheshasana, gravitational force in reverse direction is applied. In Chakrasana, lateral pressure is present. Negative pressure is passively exerted in Tadagi Mudra. All these lead to improvement of muscle tone of outer as well as inner abdominal muscles. Exactly. So ये जो हम करते हैं आसन्स for strengthening the core, तो we are strengthening the core मतलब what are we doing? हम हमारे abdominal muscles strengthen कर रहे हैं as well as हम हमारे जो GIT के muscles हैं, क्योंकि इस abdominal muscles के पीछे तो हमारा digestive system है, तो उसके जो muscles हैं उन्हें भी strengthen करना काम है इन आसन. The blood supply to the internal organs is improved. The functioning of related glands and organs like pancreas and liver is also improved. You can see that most of the asanas in yoga, they revolve around the abdominal cavity. Matlab, most of the asanas mein, there is either pressure or exertion or stretching, passive or active stretching over the abdominal cavity, which is why digestive system is one of the most benefited systems out of yoga. It has been shown that in Vajrasana, the blood supply from the lower extremities is diverted towards the abdomen. This results in improved digestion. Right. So, Vajrasana is the only asana which is recommended to be done after having meals. Because otherwise, we recommend not to do yoga for at least 4 to 5 hours after having something. But Vajrasana can be done immediately after having food. Why? Because when we sit in Vajrasana, our knees are folded and our hips are flexed, right? So, knees are flexed backwards and hips are flexed in the forward direction. So, iski wajah se, there's the, क्या बोलते हैं इसको? This kind of posture of our legs, है ना? So, these become the knees. यहाँ पे knees है. और ये हमारे legs हैं. तो इसमें क्या होता है ना, there's a arterial and venous cut off. तो मतलब ये folds की वजह से ना, the blood supply to the limbs it decreases. तो उसकी वजह से क्या होता है, there is pooling of blood in the abdominal cavity, है ना? Because the blood is not, going much to the lower limbs, it is getting pooled in the abdominal cavity, because of which the blood supply to the GI organs is increasing, which is causing the digestion to improve. So blood supply is improving, digestion is improving. Observance of the principles of relaxation of efforts like Prayatna Shaitilya and concentration on the ultimate principle, Ananta Samapatti, during asanas lead to expansion of inner awareness. Since the action of asanas and mudras are focused towards the abdomen,
Practicing the above principles develop awareness towards the inner organs and the blood flow. This induces deep relaxation in these organs and in turn regularizing of the function. These practices also lead to parasympathetic dominance. The practice of Shavasana and Yoga Nidra induce deep relaxation on the inner organs, leading to improved function. Effect of Shuddhi Kriya. Now, this is very important. Shuddhi Kriyas are very important in the respiratory system as well as the digestive system, right? So, Kriyas have specific effect on the digestive system. Vaman Dhauti can remove excess acid in the stomach. This also brings about the control over the autonomous action of vomiting. As we have seen earlier, the sphincters over the smooth muscles are under the control of the ANS. Higher brain centers are used to control the ANS during these practices. In yoga, we try to attain control and balance over gross functions of the body so as to reach control and balance at the subtler level of existence. The Kriyas effectively achieve this control of functions over the body. Vastra and Danda Dhauti physically stimulate the mucosal lining of the stomach. This, in the long run, increases sensitivity, at the same time prevents overreaction of the mucous membrane. Right, because of these things, the sensitivity of the mucous membrane increases, and अगर कुछ डैमेज हो भी रहा हो ना एसिड की वजह से, तो हमें पहले वो समझ आ जाता है, because of which we can take precautions. अगर हमारा sensitivity कम हो गया, the acid will keep on eroding the mucous membrane, but we will not be aware of it because sensitivity is less, and that can result in peptic ulcers over time. Vastra comes into physical contact with the stomach lining of the mucus, thereby stimulating and regularizing the secretion of protective mucus lining. The salt water used in all kriyas has a mild antiseptic action. This results in physical cleansing also. Shankha Prakshalan washes the whole tract. The normal passage of food through the whole digestive tract takes several hours. In Shankha Prakshalan, the water reaches the anal canal in half to 1 hour as a result of activation of gastrocolic reflex. This helps in regularization of the peristalsis. It also helps in regularizing the involuntary reflexes of bowel motility. As per yogic concepts, the blockages in the flow of prana are released by Shankha Prakshalan. Shankha Prakshalan has the action of improving the flow of Saman prana and regularizing Apana. The recti muscles are very important for the support of abdominal organs, including digestive ones. The tone and strength of these muscles is crucial for the proper functioning of the digestive organ. The Uddiyana, Agnisar and Nauli kriyas help in achieving this. Agnisar and Nauli, because of their peculiar dynamics, help to maintain and regularize bowel motility and peristalsis. These kriyas are performed during Bahir Kumbhak, producing negative intra-abdominal pressure. This helps in regularizing the blood supply in the abdominal digestive organs and also induce better functioning of the pancreas and liver, which secrete digestive enzymes. Okay. So this was the effect of Shuddhi Kriyas. So we saw that Shuddhi Kriyas ki wajah se there is cleansing, there is stimulation of the inner lining of the mucus, of the stomach and the mucous membrane. Then there is toning of the abdominal muscles because of Agnisar and Uddiyana, and because of that, when the core strength increases, the blood supply also improves to the digestive systems. Okay. Now, effect of pranayama. Regular practice of pranayama helps in normalization and balance of flow of prana. This helps in correcting the digestive imbalances by balancing the flow of saman and Udan Prana. Pranayama is practiced for mind control. This helps in achieving balance of the ANS, right? So because we are balancing ANS ke two parts hai, parasympathetic and sympathetic. If we gain control over the ANS, we can, prevent the sympathetic nervous system from being constantly stimulated, and that will in turn improve our digestive function. This in turn helps in better digestive function till digestive system is controlled by the ANS, right? Effect of Antaranga Sadhana. Antaranga yoga practices lead to calmness of mind. This in turn reduces stress and better functioning and control of the ANS, which balances and harmonizes all the functions governed by ANS, including digestion. Okay. All right. So I think that on the digestive system. Does anyone have any questions? मॅडम तो भस्म्या म्हणून रोग होतो, म्हणजे पूर्ण सतत खातात लोक, ते काय असतं? दॅट इज अ सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम. म्हणजे एक्सेसिव्ह खूप जास्त भूक लागणे, म्हणजे माहिती आहे की पोट भरले, पण I think that is on a psychological level. That is not really related to the anatomical part of it, and I don't even have much knowledge about it. Okay, thank you.
satiety levels असतात ना बॉडीचे, तर हायपोथॅलॅमस इट हॅज हंगर सेंटर अँड सटायटी सेंटर. तर हंगर सेंटर जे असतं दॅट इज द वन दॅट त्याच्यामुळे आपल्याला भूक लागते. म्हणजे हंगर सेंटर स्टिम्युलेट झालं ना की आपल्याला भूक लागते. आणि सटायटी म्हणजे फुलनेस, सटायटी म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन. सटायटी सेंटर स्टिम्युलेट झालं की आपलं पोट भरतं. पण ह्या केसमध्ये मे बी असं असेल की हंगर सेंटर इज कंटिन्युअसली बिंग स्टिम्युलेटेड अँड सटायटी सेंटर इज डॉर्मेंट. म्हणजे पोट भरतच नाहीये आणि सारखी भूक लागते. मे बी दॅट इज द पॅथोजेनेसिस. आय एम नॉट व्हेरी शुअर, बट कदाचित ते असू शकतं. थँक्यू मॅडम. हेलो. हाँ हेलो. एक्चुअली मैम बहुत सारे हेलो आर यू एबल टू हियर या मैम बहुत सारे लोगों को ना जैसे चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती है मतलब या एलर्जी होती है लाइक चिकपीस और पीनट्स और एनी लेंटिल पी आइटम तो इट इज रिलेटेड टू दिस डाइजेस्टिव ट्रैक ओनली Yeah, sometimes बिकॉज what either the digestive system is hypersensitive to after getting absorbed so in that case, in cases it is best to avoid those foods. So it's better if you avoid those foods if you're allergic to something. so this is lifelong problem. I mean it can't be treated with yoga or Can be allopathy. it can be treated, but then it is going to take a lot of time because for that you have to increase the body's acceptance of certain things. राइट. सो कुछ लोगों को दाल की एलर्जी होती है, दाल खाने के बाद दे गेट दीज काइंड ऑफ रेड इरप्शंस या फिर खुजली होने लग जाती है. सो Exactly. ये सब मतलब कुछ चीजों की वजह से हमारी बॉडी हाइपर रिएक्ट करती है. दे लुक एट दैट दोस थिंग्स एज सम काइंड ऑफ थ्रेट व्हिच इज व्हाई आवर इन्फ्लेमेटरी इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड और उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे दिखता है. सो ये हमारी बॉडी का हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है. और जो लोग ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, people who are hypersensitive or people who are in general who are very agitated all the time or the kind of people who take a lot of stress, उन्हें ये problems होने का ज्यादा chance होता है because otherwise भी वो ज्यादा stimulated होते हैं because of which उनकी body भी hyper stimulated होती है. थोड़ा सा भी कुछ हुआ कि उनकी body over react कर देती है. तो जिनका personality वैसा होता है, the people who worry a lot, who overthink a lot, or who overreact a lot to small things. छोटी सी चीज है but they feel like अभी तो बहुत बड़ी चीज हो गई and they think कि अब इसकी वजह से तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है लाइफ में. तो जो इस तरह सोचते हैं they are more prone to having these kind of problems because their body also reacts to certain substances in the same way. मॅडम ते आपण धावती करतो किंवा उलटी वगैरे झाले तर म्युकस मेम्ब्रेन लॉस्ट होतो का आणि तो किती वेळाने रिकवर होतो? किती वेळाने रिकवर होतो ते तर मला एक्झॅक्ट ड्युरेशन तर माहिती नाहीये, बट लूज होण्यापेक्षा वी कॅन से दॅट इट गेट्स क्लिअर. म्हणजे त्याच्यावरती जर काही डिसफंक्शनल सेल्स किंवा काही अशी जे सेल्स असतील जे म्हणजे डेड आहेत, ज्यांचं जे फंक्शन करत नाहीयेत पण तरी पण ते तसेच आहेत, दे आर सेडेंटरी दे, तर इट गेट्स स्टिम्युलेट. कुठली पण गोष्ट आपण थोडी स्टिम्युलेट केली की चालायला लागते ना, तसंच आहे. तर इफ दोज सेल्स हॅव बिकम डॉर्मंट और इफ द फंक्शन ऑफ द म्युकस मेम्ब्रेन हॅज बिकम डॉर्मंट, so by stimulating it by these shuddhikriya processes na, we can stimulate them and we can stimulate the regeneration. त्याच्याने त्यांचं फंक्शन बेटर होऊ शकतं. म्हणजे झोपलेला उठवत असतो आपण. फॉर एक्झाम्पल इट इज आपण कोणतरी झोपलाय, वी आर वेकिंग दॅट पर्सन अप की वेकअप, इट्स टाइम फॉर यू टू फंक्शन. तसं. थँक्यू मॅडम. So if there are no other questions, then I think we'll end it for the day. ते म्युकस मेम्ब्रेन रिकवर व्हायला 1 डे लागतो का? मला ऍक्च्युली नाही माहिती. ती गुगलवर असेल, मे बी तुम्ही गुगल करू शकता. ड्युरेशन आणि टायमिंग्स वगैरे आय एम नॉट व्हेरी गुड विथ देम. किती वेळ लागतो त्या सगळ्याला आय डोंट नो. ओके, थँक्यू. Okay, so I think that will be it for today. Thank you, ma'am. Yeah, bye, have a good day. थँक्यू मॅडम.